ascending to emperorship, where the four pillars of faith converge. आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन देखा। Today at Amrit Vela, he saw one aspect that is the foundation of knowledge in the children everywhere. वो फाउंडेशन है निश्चय। That foundation is faith. इसके बारे में क्या कहा हुआ है? What has been said for it? निश्चय बुद्धि विजयते। The ones with an intellect that has faith become victorious. तो आप सबका निश्चय देखा। So, he saw the faith of all of you. सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। Everyone definitely has faith in the Father number-wise. उसकी निशानी है सभी बाप को पहचान करके बाप के बने हैं और यहाँ भी आए हैं बाप से मिलने के लिए। Its indication is everyone has become fathers after recognizing him, and they have also come here to meet him. तो बाप में हर एक बच्चे का टूट निश्चय है। So, every child has an unbreakable faith in the Father. लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। But, along with having faith in the Father, the faith in other things should also be firm. वो है स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। It is to have faith in the self, the drama and the family. इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयती बनना। To become firm in these four types of faith means to become the ones with an intellect that has faith and become victorious. तो चेक करो इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्के बने हैं। So check, have you become firm in all these four types of faith? आपके पार्ट पर निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट पर निश्चय बुद्धि और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि, जो हो रहा है सब कल्याणकारी। You should have a faithful intellect on the Father's part, on the part of your own soul, and on drama, thinking, whatever is happening, everything is beneficial. कोई ड्रामा की बात को लेकर के अंदर अंदर या बाहर या वाचा में झगड़ा पट्टी नहीं चलेगा। He won't quarrel within, outside, that is through speech on any point of drama. सब बातों में सेट। He will be set in everything. The foundation of faith is always firm. Faith in the self, faith in the Father, and also complete faith in the drama while watching every scene in it. Always keep moving ahead on the basis of this very faith. Avyakt Vani dated 28th December 1982, page 19, beginning. Faith in the Father. ऐसे ही बाप के ऊपर निश्चय। Same is the case with the faith in the Father. जब एक बार पक्का निश्चय कर लिया कि इस नाम वाला, इस रूप वाला, इस धाम वाला, इस गुणों वाला, इस कर्तव्य वाला हमारा बाप है। Once we have firm determination that the one with this name, the one with this form, the one from this abode, the one with this virtue, the one performing these tasks is our Father,
वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, तीनों ही पार्ट है उस व्यक्तित्व के द्वारा चल रहा है। He is our father, our teacher, as well as our Sadguru. All the three parts are going on through this personality. आज निश्चय पैदा हो, कल कोई हमको हिला जाए और अनिश्चय पैदा हो जाए। Today we have faith in him, and tomorrow, if someone shakes us and we have doubts, तो अनिश्चय बुद्धि कहे जाएंगे, निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे। will we be called the ones with a doubting intellect or the ones with a faithful intellect? है अनिश्चय बुद्धि हो गए। We became the ones with a doubting intellect. तो बाप पर भी पूरा निश्चय हो। So, we should have complete faith in the Father as well. बाप को पहचाना, बाप के ऊपर निश्चय हुआ, तो एक बार निश्चय होने के बाद फिर कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। If you have recognized the Father, if you have faith in the Father, you should never have doubts after becoming faithful ones. अगर संशय होता है तो समझो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। If you have a doubt, think that you are getting converted to other religions. नहीं तो बाप ने तो कहा है कि अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। Otherwise, the Father has certainly said, you should remain firm in your religion. भक्ति मार्ग में भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। It is said in the path of bhakti as well, it is elevated to die in the religion of the self, the religion of others is dangerous. वेद का बाप कहते हैं The Unlimited Father says, तुमको लौकिक बाप में तो कभी भी संशय नहीं होता है, जो हद का वर्षा देने वाला है। you don't ever have a doubt in your Lokik Father who gives the limited inheritance. उसका दिया हुआ वर्षा एक जन्म भी चलेगा चलेगा नहीं चलेगा कोई पक्का नहीं। The inheritance that he gives may or may not last for even one birth. It isn't guaranteed. और मैं तो 21 जन्मों का पक्का वर्षा देता हूँ। However, I give you a guaranteed inheritance for 21 births. 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के भी हिसाब किताब बन जाते हैं। The accounts of the 63 births are also formed on the basis of the 21 births. तो ऐसे बेहद के बाप में तो कब संशय नहीं होना चाहिए। So, you should never have a doubt in such an unlimited Father. इसलिए बाप कहते हैं This is why the Father says, निश्चय बुद्धि विजेते। the one who has a faithful intellect becomes victorious, संशय बुद्धि विनश्यते। and the one with the doubting intellect is destroyed. अगर बाप में थोड़ा भी संशय आया तो पद का विनाश हो जाएगा। If you have even the slightest doubt in the Father, your position will be destroyed. दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे तो दूसरे धर्म वाले दास दासी बना करके रखेंगे। If you get converted to some other religion, they will keep you as maids and servants. तो कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। So, you should never have doubts. Faith in yourself. बाप के बारे में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का। Everyone certainly says about the Father, my Baba and I belong to Baba. बाप के ऊपर मेरा कह करके पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। You have claimed full right over the Father by saying, you are mine. सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। You have claimed a constant right from the Father
and become entitled to all the treasures. साथ में स्वयं भी निश्चय जरूरी है। Along with this, the faith in the self is also important. स्वयं निश्चय क्यों जरूरी है? Why is the faith in the self important? क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। It is because if you don't have faith in the self, you become disheartened. और स्वयं निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ। And the very faith in the self is, I am Swamandhari because of the Father. Swamandhari, the one who has self-respect. बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी हूँ। I am the ruler over the self because of the Father. स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। The Father himself has given me so much of self-respect. एक एक समान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ जाता है। If you bring each Swaman in your awareness, you will be so intoxicated. आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो भी अपना कितना भाग्य समझते हैं। Today, when someone receives a title, they consider it such a great fortune. लेकिन आप बच्चों को एक एक समान किसने दिया है? But who has given you children each and every Swaman? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को समानधारी बनाया। Bap Dada himself has made each child Swamandhari. तो एक एक समान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। So, keep flying happily, remembering each and every Swaman. स्वयं में भी इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, समान अधिकारी, कोटों में कोई एक आत्मा हूँ। You should always have so much intoxication of the faith in the self, thinking, I am one out of a billion souls, the ruler over the self, Swaman Adhikari, because of the Father. जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। Just like you have the faith in the Father, similarly, the faith in the self is also important. क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात समानधारी विजयी। It is because when you have the faith in the self, you have faith in all the actions, meaning you are Swamandhari and victorious. और निश्चय का अर्थ ही है सफलता। In fact, the very meaning of faith is success. ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वो तो बहुत अच्छा। It shouldn't be that you have faith only in the Father. If you have faith in the Father, it is definitely very good. लेकिन साथ में बाप के स्वयं का नशा भी आवश्यक है। But along with the faith in the Father, the intoxication of the faith in the self is also important. वो नशा है मैं कौन। That intoxication is who I am.
एक एक समान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे। Remember each and every Swaman, then faith and intoxication will be visible from your activity and your face. अभी भी दिखाई दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। It is visible now as well, and it will continue to be visible. जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, Those children who have faith, उनको क्या करवा? what do they have to worry about? इस बात पर निश्चय, Faith in what? अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, 84 जन्म लेने वाली बाप की सिकील दिया। The faith in one's own soul, that I am a point of light soul. I am a Sikildi, long lost and now found soul, which has taken 84 births. अव्वल किस्म की आत्मा मैं हूँ। क्या? I am a soul of the first order. What? और आत्माएं तो कम जन्म लेंगी। Other souls will take fewer births. ऑल राउंड शक्ति चक्र में पार्ट नहीं बजावेंगे। They will not play an all-round part in the world's cycle. और मेरा पार्ट तो इस षष्टि रूपी चक्र में, षष्टि रूपी ड्रामा कहो, नाटक कहो, उसमें ऑल राउंड पार्ट है, हीरो हीरोइन के साथ। And my part is an all-round part with the hero and heroine in this world cycle, in this world drama. नाटक में, ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका होता है? हीरो हीरोइन का। Whose parts are the highest in the drama? The hero and the heroine. हीरो हीरोइन ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, उनके साथ जन्म जन्मांतर मुझे भी पार्ट बजाते। The hero and the heroine play an all-round part. They are the ones who take 84 births. I too have to play a part along with them for many births. ये पक्का निश्चय बुद्धि हो। We must have this firm faith. हम ज्ञान सूर्य के बच्चे। We are the children of the Son of Knowledge. जब हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं तो सूर्यवंशी हुए या चंद्रवंशी हुए या इस्लामवंशी या कौन से वंशी हुए? When we are the children of the Son of Knowledge, are we Suryavanshis, Chandravanshis, Islamvanshis, or which dynasty do we belong to? Students, Suryavanshis. इस बात पर अगर निश्चय है If you have faith in this topic, तो निश्चय ठीक है। your faith is correct. अगर निश्चय डोल जाता है, If your faith shakes, संशय आने लगता है, if doubts start arising, तो फिर ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। you should go into the depth of knowledge. क्या? What? कैसे ज्ञान की गहराई में जाएंगे? How will you go into the depth of knowledge? जितना जितना आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे, The more you stabilize in the soul conscious stage, बिंदु रूप में स्थित होने के प्रयास करेंगे, the more you try to stabilize in the point form stage, उतना वो बीज जो है परिपक्व बनेगा। कौन सा बीज? the more mature that seed will become. Which seed? आत्मा रूपी बीज परिपक्व बनेगा और जैसे ही धरणी में डाला जाएगा, The seed-like soul will become mature, and as soon as it is sown in the land, और उस पर थोड़ा भी बाबा के ज्ञान का, महावाक्यों का छींटा पड़ेगा, and Baba's knowledge and great sentences are sprinkled on it even a little, तो वो अंकुर बन करके उगरेगा जरूर। it will definitely sprout and grow. तो क्या करना है? So what should you do? अगर संशय बुद्धि हो जाए तो क्या करना है? If you have a doubting intellect, what should you do? आत्म की स्थिति में रहने की पक्की प्रैक्टिस करना है। You should firmly practice to stabilize in the soul conscious stage. बिंदु रूप बनने की पक्की प्रैक्टिस करना है।
You should firmly practice to become a point. जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे उतना विस्तार अपने आप होता जाएगा. The more you stabilize in the seed form stage, the more it will go into expansion automatically. मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा. Thinking and churning will definitely go on. ये हो नहीं सकता कि आत्म की स्थिति में स्थित रहने का प्रैक्टिस करने वाले का मनन चिंतन मंथन चलेगा तो हमें अपने पार्ट की जानकारी 84 जन्मों की भी हो जाएगी. It is impossible that the one who practices to stabilize in a soul conscious stage doesn't think and churn. And if thinking and churning goes on, you will come to know even about the part of your 84 births. अपने में निश्चय, आत्मा में निश्चय. Faith in the self, faith in the soul. कभी भी निगेटिव संकल्प ना आए अपने लिए. One should not create any negative thoughts towards oneself. क्या? What? सदैव ऊंचे से ऊंचे संकल्प आए. मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ. One should always create the highest thoughts. I am an elevated soul. फिर Then ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा हूँ. I am the child of the highest on high Father. Keep all your specialties before you and not your flaws. Then, you will have faith in yourself. Do not overthink your weakness. This way, you will keep moving ahead happily. You have held the Father's hand, so those who hold the Father's hand always move ahead. Have this faith. When the Father is almighty, those who hold his hand no doubt go across. They themselves may be weak, but the companion is strong, isn't he? This is why they will definitely go across. Keep in mind, those who always have a faithful intellect become a victorious gem. Avyakt Vani dated 28th December 1982, page 19, beginning. स्वयं पर निश्चय. क्या? Faith in yourself. What? विल पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Should you have willpower or not? विल पावर है. मैं आत्मा हूँ. मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? If you have willpower, I am a soul. Whose child am I the soul? बाप का बच्चा हूँ. I am the Father's child. तो पक्का निश्चय है या कच्चा निश्चय है? Do you have firm faith or uncertain faith? अगर पक्का निश्चय है, बाप का बच्चा हूँ, If you have firm faith that you are the Father's child, बाप अमरनाथ है तो बच्चा भी कैसा होगा? अमर होगा. the Father is Amarnath, meaning Lord of the immortal ones. How will the child also be? He will be immortal. कितने जन्म लेने वाला हुआ? He is the one who has how many births? 84 जन्म लेने वाला हुआ. He is the one who has 84 births. 84 जन्म लेने वाला मैं बच्चा आत्मा हूँ. If he has faith, I the soul am the child who has 84 births. तो कितनों की लिस्ट में आने वाला हुआ? I am the one who comes in the list of how many? 4.5 लाख जो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे उस लिस्ट में आने वाला मैं बच्चा हूँ. I the child am the one who comes in the list of 450,000 souls who will go to heaven while being alive. ये स्वयं पर निश्चय पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Should you have this firm faith in yourself or not? कि कन्वर्ट होने वाला हूँ. Or am I the one who gets converted? शरीर छोड़ दूंगा. Will I leave the body? दूसरे धर्म में चंद्रवंश में चला जाऊंगा, इस्लाम वंश में चला जाऊंगा. Will I go to other religions? Will I go to Chandravansh or the Islam Vansh? नहीं. No. हमें तो बाप आया हुआ है. बाप यहीं आकर के हमको वर्षा देने के लिए आया हुआ है. The Father has come here itself to give us the inheritance. जो विधर्मी है वो बाप से वर्षा इस जीवन में नहीं ले सकेंगे. ये आत्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए. Those who are Vidharmis won't be able to take the inheritance from the Father in this very birth. You should have this faith in the soul. आत्मनिश्चय. You should have self-confidence. मैं परमात्मा बाप का ऐसा आत्मा रूपी बच्चा हूँ. I am such a childlike soul of the Supreme Soul Father. वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ.
I am the soul who has complete 84 births. ब्रह्मा की तरह 50 वर्ष कम भी नहीं। Not even 50 years less like Brahma. क्या? What? मैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा नहीं हूँ। I am not a soul who takes on a subtle body. मैं आत्मा हूँ, I am a soul. भूत प्रेत नहीं हूँ। I am not a ghost or spirit. एक निश्चय। This is one of the faiths. Faith in the drama. साथ में तीसरी बात तो ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है। Besides this, the third thing, that is, the faith in the drama is also very important. क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और समस्याओं के साथ साथ सफलता भी होती है। It is because there are problems as well as success in the drama. अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्याओं को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं। If you have firm faith in the drama, you change problems into solutions with the intellect that has faith based on the faith in the drama. क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। It is because faith means victory. तो किसके ऊपर विजयी बनते हो? So, over whom do you become victorious? परिवर्तन करने में। You become victorious in bringing transformation. एक सेकंड में समस्या परिवर्तन होकर के समाधान स्वरूप बन जाए। The problem should transform into the embodiment of solution within a second. थोड़ा भी हलचल में ना आए। You shouldn't come in commotion even a bit. अचल रहेंगे क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। You will remain stable because you become steady and stable through the knowledge of the drama. ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले की समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा हूँ। You have this faith, I myself am the embodiment of solution, meaning successful soul of the previous cycle. पहले भी थी, अभी भी बनी हूँ। I was that earlier and I have become that now too. और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। I alone will become that after a cycle. तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है। So, this intoxication enables you to make your faith in the drama firm. इसमें फकुर रहता है, नशा रहता है। पहले भी मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनती रहूंगी। You become prideful and intoxicated thinking, it was I who was that earlier, I am that now, and I alone will continue to become that. इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। This is why the faith in the drama is also important in this Purusharthi life. ड्रामा पर निश्चय। Faith in the drama. जो हुआ ड्रामा। Whatever happened is drama. किसी बात में हिलना डुलना नहीं होने पाए। You shouldn't shake in any matter. बच्चा मर गया, कोई बात नहीं। If your child died, never mind. हिसाब किताब पूरा हुआ, उसका जो हिसाब किताब था पूरा कर गया। The karmic accounts were settled. Whatever karmic accounts he had, he settled them and left. आखिरी जन्म की तमो प्रधान आत्मा थी। He was a tamopradhan soul of the last birth. उस आत्मा ने अपना हिसाब किताब हमसे ले लिया, सुख दुख का गया। That soul settled his karmic accounts of happiness and sorrow with us and went away. खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए। Should you feel happy or sorrowful?
खुश होना चाहिए। You should feel happy. अम्मा मरे तो हलवा खाओ। सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में किससे मिलता है? Even your mother dies, have halwa. That is an Indian sweet dish. From whom do you get maximum love in the world? अम्मा से ही मिलता है। You get it from the mother herself. पत्नी से भी वो प्यार नहीं मिलता जितना अम्मा से मिलता है, निस्वार्थ प्यार। You don't get that love, the kind of selfless love that you get from the mother, even from the wife. वो अम्मा भी शरीर छोड़ गई तो भी मस्त रहो। Even if that mother leaves her body, stay delighted. खुश रहो। Stay happy. तो ऐसा ड्रामा पर पक्का निश्चय हो जाए कि कुछ भी होता रहे, हमारा निश्चय टूटे नहीं ड्रामा के ऊपर कि ड्रामा कल्याणकारी है। So, you should have such firm faith in the drama. No matter whatever keeps happening, your faith in the drama shouldn't break. That you think drama isn't beneficial. अरे ड्रामा में ये काम अच्छा नहीं हुआ, नहीं, Arey, this scene in the drama isn't fair. No. जो हो रहा है वो सब अच्छा, जेल में डाल दिया। Whatever is happening is good. Suppose if someone is put in jail कुछ सोचने लगे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, and he starts thinking, Arey, this is awful. सारी बेइज्जती हो गई, थूथैया हो गई समाज में। I am utterly disgraced and demeaned in the society. तो ये निश्चय की निशानी है या अनिश्चय की निशानी है? Is it the sign of faith or doubt? अनिश्चय की निशानी। It is the sign of having doubt. अरे ऊंच ते ऊंच बाप आया हुआ है इस सृष्टि पर। Arey, the highest of the high God has come to this world. वो ऊंच ते ऊंच बाप की इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि होती है। The highest of the high Father is defamed the most in this world. सबसे जास्ती ग्लानि, सबसे जास्ती गालियां किसको खानी पड़ती हैं? Who has to endure defamation the most? बाप को खानी पड़ती। तो हम कौन सी चीज है? The Father has to endure them. What are we then? हमारी ग्लानि हो गई, हमको जेल वेल में डाल दिया जाए, हम हमारी बदनामी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। If you are defamed, if you are sent in jail, etc., if you are disgraced, you should think, I don't care. हम जानते हैं जितनी यहाँ ग्लानि होगी उतना ज्यादा हमारा गाइन भी होगा। I know that the more I am defamed here, the more I will be glorified. और जो ग्लानि करेंगे वही गाइन करने के निमित्त बनेंगे। What's more, those who defame me, they themselves will become the instruments for glorifying me. तो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? So, should you feel happy or sorrowful? खुश होना चाहिए ड्रामा के ऊपर। You should feel happy watching the drama. ये अनादि बना बनाया खेल है। This is an eternal and a preordained drama. कोई को दोष भी नहीं दे सकते You can't blame anyone. और इसमें कोई की निंदा की भी बात नहीं है। And there is nothing about defaming anyone in this either. ड्रामा है, ड्रामा में पार्टदारी होते हैं। There is a drama. In a drama there are actors. कोई को राजा महाराजा का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट मिलता है। Among them, someone receives the part of a king or an emperor, and someone receives the part of a donkey. तो अपना अपना पार्ट तो बजाना ही है। So everyone certainly has to play their part. दोष या निंदा की कोई बात नहीं है। There is nothing about blaming or defaming anyone in this. अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है। Now you have received the knowledge. तो ज्ञान की निशानी क्या है? So what is the sign of knowledge? ज्ञानी की निशानी है ड्रामा अच्छा लगना चाहिए। The sign of a knowledgeable person is that he should like the drama. कुछ भी हो जाए, ड्रामा के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। No matter what happens, he should never raise a finger on the drama. समझना चाहिए कैसा वंडरफुल ड्रामा है। He should think how wonderful this drama is. कितने एक्टर्स हैं, There are so many actors. आत्माएं कितनी छोटी छोटी होती है The souls are so small. और हर एक आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है।
and so many parts are contained in each soul. ये बात समझाने की है। This topic is to be explained. समझेंगे तो समझा सकेंगे, If you understand, you will be able to explain. बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। As for the rest, there is nothing about deformation in this. इस ड्रामा में संशय की कोई बात नहीं है। There is no question of doubt in this drama. ड्रामा में कभी संशय नहीं है। जैसे बाप में संशय नहीं आना चाहिए, वैसे ड्रामा में भी कभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाप भी कल्याणकारी तो ड्रामा भी कल्याणकारी। You should never have a doubt in the drama. Just as you shouldn't have doubt on the father, similarly, you should never have a doubt in the drama. The father is beneficial, so the drama is also beneficial. कुछ उल्टा पलटा हो जाए, If something goes wrong, कुछ दुखी हो जाए, if someone becomes sorrowful, रोना पीटना करने लगे, if someone starts crying, तो कहे ड्रामा बेकार है, they say the drama is worse. ड्रामा बहुत अकल्याणकारी, Drama is very inauspicious. दुखदायी है। ऐसा ड्रामा भगवान ने क्यों बनाया? It is sorrow giving. Why did God make such drama? जो सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, That all are crying, all are becoming unhappy. नहीं, No. जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में सब कल्याणकारी। Whatever is happening in the drama is all beneficial. अभी हम अज्ञानी हैं तो हमें ड्रामा में अकल्याण दिखाई पड़ता है। Now we are ignorant, so we see harm in the drama. जब हमारी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा तो ड्रामा में कोई भी एक्ट, किसी की भी कोई भी प्रकार की हमको दुख की भाषा नहीं आवेगी। When knowledge sits properly in our intellect, no act of anybody in the drama will make us feel sorrowful. ज्ञान माना ही सुख, Knowledge itself means happiness. ज्ञान इतनी पराकाष्ठा में बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, कैसे भी दुखदायी मनुष्य हो, कैसे भी बगुलों के बीच में रहना पड़े, फिर भी उनके बीच में प्रसन्नता न जाने पाए। Knowledge should be seated in the intellect to such a zenith that no matter what the condition is, what the circumstances are, how the atmosphere is, what kind of sorrow-giving people there are, you may have to stay amidst whatever kind of herons, still, your happiness shouldn't disappear by living amongst them. जिनको ड्रामा का ये निश्चय हो गया और ये पक्का पक्का समझते हैं, Those who have this faith in drama and those who understand this firmly, वो तो बड़े बड़े मस्त रहते हैं they certainly stay very delighted. और वो बहुत उछलते हैं अच्छे तरीके से। And they jump for joy a lot. उनकी बातचीत, वातावरण, Their way of speaking and atmosphere, जब तक बात करेंगे तो खुशी होगी देखने वालों को, सुनने वालों को कि ये तो बड़ा अच्छा। whenever they talk, those who see them, those who listen to them will feel happy. They will say, this one is very nice. अच्छा देखने में आते हैं। They seem to be good. ये कभी बाबा को पीठ नहीं दिखाएंगे, They will never show their back to Baba. कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। They will never leave him and go away. Faith in the family. और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय। Along with this, the fourth thing is the faith in the family. क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। It is because the father created the family as soon as he came. Why don't you always have good feelings, good wishes for the family? What is its reason? Just like you have the affection of the heart for the father, and the sign of the affection of the heart is that it is unbreakable. Similarly, you should have the affection of the heart for the Brahmin family too.
Just like the sign of affection for the father is to always say yes sir when the father says something, similarly, you should always have such affection of the heart for the Brahmin family. You should know the method to transform your feelings. Then, the balance of affection for the father and the family, the balance of remembrance and service will automatically be visible in practice. Avyakt Vani dated 3rd February 1988, page 246, end. तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है. Just like you have the faith in the father, similarly, the faith in the family is also essential. क्योंकि परिवार है किसका? It is because, after all, whose family is it? और इतना बड़ा परिवार दूसरे किसी का हो सकता है? And can anyone else have such a big family? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना परिवार विश्व में किसी का नहीं है. So, to have the faith in the family is also extremely essential because no one has such a big family in the world. आप जितना परिवार को चेक करो विश्व में, कोई का है? You can check as many families as you want in the world. Does anyone have such a family? किसका है? Whose is it? परिवार की रीत से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है. Not even a divine father has such a big family. वहाँ फॉलोअर तो हैं, परंतु यहाँ तो परिवार है. They do have followers, but here there's a family. परिवार के साथ ही सेवा में और संबंध में रहते हो. You stay in service and connection with the family. ऐसे ही नहीं रहते हो. कि हमारा तो बाप से है ही कनेक्शन. You don't stay thinking, we definitely have connection with the father. परिवार से कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या बात हुई? It doesn't matter if we don't have connection with the family. To go in the capital means to be content and make others content in the Brahmin family, to come in an elevated relation. Now, why are you afraid of the Brahmin family? When something happens, why do you say, ours is indeed Baba? What will the sisters or brothers do? We haven't made a promise to the brothers and sisters. Nevertheless, this Brahmin life is a life of pure relation, a life of the rosary. The very meaning of the rosary is a gathering. If you have any doubt or waste thought regarding the faith in the Brahmin family, it shakes your faith, it brings you in a state of tumult. Baba is good, the knowledge is good, but these dadis aren't good. The teachers aren't good. The family isn't good. Are these the words of the one with a faithful intellect? Avyakt Vani dated 15th April 1992, page 194, middle. परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है. Your faith in the family has to last for 21 births. इस बात को जानते हो ना? You do know this, don't you? परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ. You come to know this
only after coming in relationship with the family. I am moving along with everyone in such a big family, becoming the one with an intellect that has faith. परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। In order to move along with the family, you have to pay this attention. Everyone has different sanskars in the family. और होंगे भी। And they will have that. परंतु आपका यादगार माला है। However, your yadgar is the rosary. माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर। Look at the rosary. On one side, there is the number 1 bead, and on the other side, there is the 108th bead. क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। It is because there are people with different sanskars in the family. तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है ना। So, move along with such a big family after understanding each other's sanskars. There is one family, one father, one kingdom. So, you have to move along united, haven't you? परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल हो। Just like you have a big family, similarly, you should have a big heart for each other. हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर के चलना, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। Move along while stabilizing in the stage of having good wishes and good feelings for everyone, because it is within the family that there are different sanskars and nature. लेकिन कोई समझे परिवार से हमें क्या है? But if someone thinks, what do I have to do with the family? परिवार नहीं तो बाबा तो है। If not the family, I definitely have Baba. लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। But here, there is the establishment of both, the religion and the kingdom. सिर्फ धर्म नहीं है, There isn't just the religion. दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म होता है, राज्य नहीं होता। All the other religious fathers who came in the world simply establish a religion. They don't have any kingdom. राज्य तो बाद में आता है। The kingdom is established later on. यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है। Here, all of you have to rule as well. और इसी जन्म में करना है। And you have to rule in this very birth. तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। So, there is the need of the family in the kingdom. और 21 जन्म में भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। And you have to live with the family in different forms for 21 births. परिवार को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। You can't go somewhere else leaving the family at all. तो चेक करो, ऐसे नहीं समझो कि बाप जाने और मैं जानूं। So,
Check this. Don't think the father knows and I know it. बाप से ही कार्य है, ऐसे नहीं समझो। I have to do everything with only the father. Don't think like this. लेकिन अगर इन चार बातों में निश्चय होने से एक में भी निश्चय कम है, तो आगे चल करके जरूर हलचल में आ जाएंगे। However, even if one type of faith is lacking from these 4 types of faith, you will definitely be affected by the upheaval later on. सेवा के साथ ही बाप तो सकाश देने वाला है, लेकिन सेवा के साथी कौन है? Your companions for service, that is, the father is definitely the one who gives you searchlight. But who are your service companions? साकार का साथ है तो परिवार का है। If you have the support of the corporeal one, you have the support of the family. तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं। So, the father saw the majority of children are moving along well in having these 3 types of faith. लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना और एक एक को परिवार के कल्याण की भावना से देखना और उसी तरह चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। However, in terms of maintaining relationship with the family, harmonizing your sanskars, looking and moving along with each other with the vision of having benefit for the family, many children have different capacity in this subject. The easiest way to harmonize the sanskars is become humble and give the elevated seat to the other person. If you make him sit on the seat, he will automatically step down and make you sit on it. If you try to sit on it by yourself, he won't let you. However, if you make him sit on it, he himself will step down and make you sit on it. So, making him sit on it will be like making yourself sit on it. Make the lesson you first firm. Then, your sanskars will easily harmonize. Avyakt Vani dated 18th March 1981, page 66, end. लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नालिश लोग के सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं, वो ही नंबर 1 अथवा नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। But the father saw, those who become knowledgeful in having the faith in the family, those who constantly come and stay together with the family in the stage of being a detached observer equal to the father, they alone become number 1 or come in the number 1 division. तो चेक करो, भाव स्वभाव तो परिवार में होता ही है। So check. Different feelings and natures are definitely present within the family. और भाव स्वभाव होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं। If there are different feelings and natures, trivial mistakes also happen. Obstacles arise as well. और वो विघ्न परिवार के संबंध में ही आते हैं। In fact, those obstacles arise in relation to the family itself. तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। So, the most important thing is
to pass in relation with the family. अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई कमी होती है तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता रहता है। If there is any shortcoming in moving along or maintaining a relationship with the family well, be it a small or a big obstacle, it keeps causing trouble. ये क्यों होता? ये कैसे होता? Why does this happen? How does this happen? ये सब परिवार के कनेक्शन में आता है। All these questions arise in connection with the family. तो क्यों के बजाय न्यों होना चाहिए। So, there should be this way, yaw, instead of why, क्यों. क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिल करके चलना है। You don't have to think why, but you have to move along together. परिवार की प्रीति की रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है। You have to maintain the manner, reet, of the love, preet, for the family, because it is the family of the Father. भगवान का परिवार है। It is God's family. ये कोई रिवाजी परिवार नहीं है। It isn't an ordinary family. तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह मेरा परिवार। So, you should have this intoxication. Vah Baba, Vah drama, Vah I, the self, and Vah my family. तो ठीक है। So, is it all right? इस बात को चेक करते हो? Do you check this? चारों ही बातों में पास हो? Did you pass in all the 4 points? एक में भी कम नहीं, चेक करो। Check this. You shouldn't lack even in 1 point. अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है। Check it right now, because it is the only method to become victorious. परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं। The sanskars emerge within the family itself. और वो संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। And in order to harmonize those sanskars, you need to transform yourself and look upon the family with a high vision. The closer you come to each other, the closer the success will be. Close to each other means close in sanskars. The closer you are, the more you should give respect to each other. The more you give respect to each other, the more the entire world will respect all of you. You will learn respect by giving respect. You receive it by giving, not by taking. You receive something by taking, and something else by giving. Even if someone's thought isn't clear to you, you should never say no. Always utter the word yes. When you say yes here, your subjects there in the golden age will also say yes, yes. If you say no, no here itself, your subjects will also greet you from afar. So, remove the word no. First, say yes for everything. Saying yes, yes itself is the means to make the sanskars of others easy. Avyakt Vani dated 7th June 1970, page 261, end 262, beginning. कोई
परिवार का आदमी है, परिवार का भाती है, परिवार का बच्चा है, और ये कहे कि हम तो बाप को मानेंगे, ना अम्मा को मानेंगे, और न इन बड़े भाइयों छोटे भाइयों के किसी को नहीं मानेंगे। If there is a person in a family member, a child in a family, and says, I will accept the father, I will neither accept the mother, nor the elder brothers, nor the younger brothers. हम कोई की बात मानने वाले नहीं, I will not accept anyone. सबको गोली छोड़ा देंगे, I will shoot everyone. इनको बुढ़ा होने दो, Let them turn old. इनको सबको मार डालेंगे। I will kill everyone. और नास्तिक लोग आज की दुनिया में ऐसा करते भी हैं And the atheist people even do that in today's world. कि बहुत बुढ़े हो जाते हैं, When they, that is the parents, grow very old, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तंग कर देते हैं, when they trouble the doctors in the hospital, परिवार वालों को तंग कर देते हैं, तो क्या करते हैं? when they trouble their family members, then what do they, that is the children, do? वो अपने खुद भी दुखी होते रहते हैं, They, that is the old people, themselves become sorrowful too. उनको ठां कर देते हैं, उनको नास्तिक कहें या आस्तिक कहें, So they are short. Should they be called atheist or theist? और नास्तिक है। They are atheists. One says something, the other accepts it. Don't use the power to face in the Brahmin family. Use that power to face Maya. If you use that power to face in the family, the gathering won't become powerful. Even if you don't like something, you should respect one another. Don't cut anyone's thought or speech at that time. Avyakt Vani dated 9th December 1975, page 271, end 272, beginning. बाकी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण परिवार पर पूरा निश्चय। Baba, as for the rest, it isn't said that you should have complete faith in the Brahmin family. अरे ब्राह्मण परिवार में तो 9 कुरियां हैं। Arey, there are 9 categories in the Brahmin family. 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंचे से ऊंचे कुरी के ब्राह्मण भी हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे देखना हो तो कहाँ देखो। There are Brahmins of 9 categories. There are the Brahmins of the highest of the high category as well. If you want to see the best Brahmins and even the worst Brahmins, where should you see them? है यहाँ देखो। You should see them here. तो ये थोड़ा ही कहा, ये तो हमने मन मत मिक्स कर ली कि ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। So, that's not what was said. You mixed your own opinion that you should have faith in the Brahmin family. हाँ, Yes, आप समान जो है वो ही हमारा परिवार है। those who are equal to us, they themselves are our family. अगर आप समान नहीं है, बाप समान नहीं है, तो हमारा परिवार नहीं है। If they aren't equal to us, if they aren't equal to the father, they aren't a part of our family. बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध हैं, Our relationships are based on the father's relationship. वो ही हमारा परिवार है। That itself is our family. जिनका बाप से संबंध नहीं, Those who don't have a relationship with the father, बाप से कनेक्शन नहीं, बाप से संसर्ग नहीं, संबंध नहीं, those who don't have a connection or contact with the father, वो हमारा परिवार नहीं हो सकता। they can't be a part of our family. तो बाबा कहते हैं सभी धोखा देने वाले हैं। Question. So Baba says everyone is going to deceive us. तो ब्राह्मण परिवार पर कैसे निश्चय करना है? So how should we have faith in the Brahmin family? कहा किसने कि तुम पूरे ब्राह्मण परिवार पर निश्चय करो? Baba, who asked you to have faith in the entire Brahmin family? ब्राह्मण परिवार में सब एक जैसे हैं क्या? Is everyone alike in the Brahmin family? नहीं, तो हम कैसे निश्चय करें? No. So how can we have faith in them? The father, knowledge, even in the subject of knowledge, particularly drama and family. If all the 4 subjects are unfirm, obstacles arise. You have to pay attention to go across the obstacles. This is why recognition of the family, love for the family, understanding each other, this is very essential. Avyakt Vani dated 31st March 2010, page 3, beginning.
बाप पर निश्चय होगा तो बाप के परिवार पर भी निश्चय होगा। If you have faith in the father, you will have faith in the Brahmin's family as well. बाप सूर्यवंशी तो बाप का परिवार भी ऐसा होगा। When the father is Suryavanshi, how will his family also be? सूर्यवंशी होगा। It will be of Suryavanshis. या परिवार में एक बात करने वाला दूसरा दूसरी बात करने वाला होगा। Or will one person in the family say one thing and the other one will say something else? है? जो बाप का परिवार होगा अव्वल नंबर, वो दो बातें करने वाला होगा। Will the members of the number one family of the father speak different things? उसके भांति दो प्रकार की बातें करने वाले होंगे। Will they speak different kinds of things? दो प्रकार की धारणाओं वाले होंगे। Will they be the ones who follow different kinds of principles? या एक के राज्य में चलने वाले होंगे। Or will they act according to the rule of the one? एक के राज्य में चलने वाले होंगे। They will be the ones who act according to the rule of the one. Just like it is necessary to have a relation with the father, similarly, it is also very necessary to have relation with the Ishwariya family. You will come in relation and contact of the number one soul, that is the Father Brahma, and the Ishwariya family in the entire cycle. Don't think, well, the father is mine and I am the father's. This isn't the sign of passing with honors either. Because you aren't the souls of sannyasis, sages or saints. You aren't those who stay aloof, but you are the souls who are to become the support of the world. You aren't world aloof, but world benefactors. You can't slip out of the thread of the imperishable love with the family. The victorious gems can't go out of the thread of love. This is why, never have this thought, I will stay aloof from this thing, this place, this service, this companion and prove myself by making my stage good. You say, don't you? I can't stay with this one, I will stay with that one. I can't make progress in this place but there will be progress in another place. There is obstacle in this service, the other service will be good. All these are the thoughts of being aloof. If you get into this habit once, it won't let you be stable anywhere. It won't let your intellect concentrate either. It is because the intellect got into the habit of changing. This will also be counted as a weakness. Avyakt Vani dated 7th March 1990, page 175, middle. क्योंकि परिवार को छोड़ा तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है और निभाना ही है. Because if you leave the family, you won't go anywhere. You have to live here itself and fulfill your responsibility. तो इसमें पास हो. So, have you passed in this? कभी ऐसे तो नहीं आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता. Do you ever think, hadn't he been there, it would have been better? ये ऐसा क्यों करते हैं? Why do they do that? ऐसा ये क्यों होता है? Why does this happen? ये संकल्प आता है. Do you have this thought? एकदम परिवार का नशा. You should have great intoxication of the family. चारों ही प्रकार के निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में नहीं हारेगा और ना ऐसे वैसे संकल्प करेगा. The one with all the 4 types of faith will never lose because of waste thoughts. He won't generate waste thoughts either. संकल्पों में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे ही नहीं.
This may come to your thoughts, why does this happen? But questions like why and what shouldn't shake you at all. हमारा मूड बदली नहीं करे। Your mood shouldn't change. इसको कहते हैं 4 में ही पास। It is to pass in all the 4 types of faith. तो आपने हाथ तो उठाया, ये बाप दादा को खुश तो किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। So, you did raise your hands and please Bap Dada. But sometimes, Bap Dada has to hear and see shortcomings in terms of the family. तो एकदम बड़ी दिल हो। So, you should have a very big heart. सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना, क्योंकि परिवार ही एक है। Reform everyone with good wishes and good feelings, because there is just one family. तो एक मत होके चलना है और चलाना भी है। So, you have to move along having one opinion, and you have to also make others move along. सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। You don't have to just move along. You have to make others move along as well. इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। This is why Bap Dada is drawing your attention towards this. Those who pass in any kind of commotion in the family, those who don't generate waste thoughts, they also have to make others the same. उसी प्रकार चलाना है। They have to make others move along the same way. परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा। It is your family, so you definitely need to cooperate with the family. परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं। You can't cut yourself off from the family. You don't have to go away leaving it. रहना तो यही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा। You have to live here. So you will surely have to get the family ready. लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी तो एक दो के सहयोगी बना आगे बढ़ाते थे। When you had a good intellect in the Lokik life, you used to make each other move ahead, becoming their companions. गांव को भी अपना परिवार समझते थे। You also used to consider your village as your family. और ये तो अलौकिक परिवार है। In fact, this is the Alokik family. क्योंकि खिटपिट जो होती है और माया जो आती है, वो परिवार की बातों में ही माया आती है। It is because conflicts arise and Maya comes in terms of the family alone. संबंध में आती है। She comes in relationship. व्यस्त थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। You generate waste thoughts in connection with the relationship. The very means of achieving success in a gathering is to change yourself. Don't think of transforming others, but transform yourself. Only the one who knows how to mold himself becomes real gold. Avyakt Vani dated
27th March 1983, page 105, beginning. It takes just a small thing for keeping the family content. Give regard and take regard. You should maintain this record day and night. The record of regard should be constantly maintained. Avyakt Vani dated 27th March 1981, page 114, end. ऐसे चारों ही निश्चय में पास होना है, 3 में 2 या 2 में नहीं. In this way, you have to pass in all the 4 types of faith, not in 2 or 3 types of faith. नंबर 1 होना है. You have to become number 1. इसके लिए विनाश की तैयारियां भी होते भी अभी विनाश रुका हुआ है. Though the preparations of destruction are over, the destruction is still waiting. प्रकृति भी बाप के पास आती है. प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है मेरे ऊपर. Nature also comes to the father and says, "There's a lot of burden on me." अब प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है. Now, nature also wants to become free of it. और माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है. And Maya also says, "I know that my part is going to end now." लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं. But there are such children in the Brahmin family who become my companions over trivial matters. बिठाए देते हैं मेरे को. They sit me down. तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय परसेंट में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है. So, in order to bring your kingdom, these 4 types of faith are still in percentage. This is why the time has also stopped. Someone who has faith in the Father alone isn't called the one with a faithful intellect. Along with having a faithful intellect for the Father, you should have a faithful intellect for yourself as well. And together with that, whatever act is being repeated every second in the drama, you should have 100% faithful intellect for it. This is called having a faithful intellect. Avyakt Vani dated 27th February 1972, page 232, beginning.